LSA. Yeah. Are we live? Okay. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Mahira and oh my god, we're live. Am I live? You're live. Okay, fine. I'm live on Facebook. And so I decided that we were deciding where to go live from. First I thought we'll go live from my house, but then it's like a zoo with a lot of people and Aslan would not have let this happen. So I'm sitting in my other home actually, which is Momal Production and MD, oh sorry, Momina Duret Productions. And अभी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी इस ऑफिस में और दिखाऊंगी कि यहाँ क्या क्या होता है और यहाँ मुझे जब मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मैके में आई हूँ क्योंकि I swear they treat me like really well and then they also complain, but anyway that's later. My first and foremost thing and the reason why I'm doing this is because I want to thank all of you, all the people who have been so supportive, all my fans, and I know it's difficult to be my fan because I don't because I don't work so much and you guys are always saying make more films or do more dramas, but yeah, so thank you from the bottom of my heart, thank you so much. Also need to thank a lot of other people. Bin Roy, I think I've said this many times, but I'll say it again. Momina Duret, Farhat Ishtiyaq, Haisam, Tanveer, बड़ा स्पेशल थैंक यू तनवीर को. ऊपर बैठे हुए मैं उनके पास भी जाऊंगी. हसीब शहजाद कश्मीरी जिन्होंने हमारी डूबती हुई नैया संभाली है और all the actors, the entire crew, बाबर का चेहरा दिखाइए. Hello. और the actors, my entire family and friends who जो patiently bear करते हैं मेरे साथ कि नहीं निकल रही, क्या होगा ये वो. सरमद और आसिम, बहुत सारे लोग हैं. And of course Seher, who's making the video right now. Why are you winking at me? Seher just winked at me. And then there's of course Sadke Tumhare. And it's the same exact people except of course Ehtisham. And yeah, I forgot Farhan Alam. Thank you. Am I forgetting somebody? अच्छा, उर्दू में बात करनी है. So yeah, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों को शुक्रिया करना है. अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. Lux was something else. मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरह ये एक शुरू हुआ. हमेशा मैं मना करती थी, मुझे नहीं करनी परफॉर्मेंस, मुझसे नहीं होता स्टेज पे. और फिर मेरी एक दोस्त शहजाद ने मुझे कहा कि ये किस तरह की बात है, ये तुम्हारे गाने हैं, तुम एक आर्टिस्ट हो, तुम्हें फिर ये मौका नहीं मिलेगा. तुम्हारे गानों पे और लोग भी डांस कर रहे हैं, ये भी हो रहा है, why don't you do it? I was like, मैं कैसे करूँ? अपनी तरह कर लो. So I decided, okay fine करते हैं, लेकिन back and forth, हाँ ना. हम 1000 मीटिंग्स में जाते थे, 1000 दफ़ा हाँ ना होता था. Finally हाँ हो गया. Of course frantic calls मैं करती थी आसिम को कि how will I do this, and Asim would be like you'll do it. But nothing that we do, any actor, anybody in the world, anything anybody achieves is they don't do that alone. They actually do it because there is a huge force behind us, be it our friends or family or people at work. Such support from the Lux team, thank you, and I'm sorry for driving you all mad. Kabi and Nusra especially, thank you. Priya Altaf, who is also amazing and just kept pushing me. Niga ji and her entire troupe. Who is that? Okay. And Puri dancers ki troupe. The people who came together with me, Sherry of course, my buddy, I love you. And Humayun, जिन्होंने जो obviously मैं कैसे करूँगा, उनको मैंने 2 मिनट रिहर्सल करा के बुला लिया. और Mohsin, who was brilliant.
So thank you. And now I'm going to start answering your questions. And एक इधर देखिए, इनको देखिए, ये जो है ये मेरी ये इनकी है और ये जो है ना मैं आपको क्या बताऊँ ये क्या चीज़ें कहाँ जा रही हैं? एक मिनट रुकिए आमिर भाई प्लीज। ये आमिर भाई हैं, ये दुनिया की सबसे बेस्ट चाय बनाते हैं और ये वो वाली याद है कौन सी फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना, वो जो नहीं when शाहरुख is arriving तो अम्मा को पता चल जाता है कि वो कभी खुशी कभी गम, उसको पता चल जाता है कि वो आने वाला है। आई स्वेयर मेरी गाड़ी आने ही वाली होती है कि इनको आमद हो जाती है कि मैं आने वाली और मैं आती हूँ और चाय रखी हुई है। थैंक यू। हाँ वैसे बड़ा अच्छा, एक दफा बोल के तो सुना दें, आपकी आवाज गब्बर से कम नहीं है। प्लीज आए। अभी तो वैसे ही खराब हुई। फिर से बोले। अभी तो वैसे ही आवाज सही। I feel like a VJ again by the way. Okay, अच्छा जी, so we are gonna go with the questions. Are they coming in? Should we start? Yeah. Okay. So the first one to know how amazing was your performance at LSA. Okay, and who is it? And this is by Amreen Ahmed. Amreen Ahmed. Yeah. How amazing it was! It Yeah. was I waited all day till about 3:30-4 बज गए थे सुबह के. It's because वो finale performance थी. तो हम थक भी गए थे, but I think it was a lot of fun. बहुत मज़ा आया. I wish कि लोग जो obviously चले गए थे या you know the crowd was a little bit less because it was so late. लेकिन it was amazing. बहुत मज़ा आया. हाँ अगर ज़रा सी मैं और like पाँव में जान होती या you know गिरी नहीं होती whatever तो मैं और भी अच्छा करती. But बहुत मज़ा आया. Next question है Mariam Sibghat. She's asking how has fame affected your life? Okay. In lots of ways actually. Nothing really remains the same, you know. आप famous या whatever होते हैं, आपको success मिलती है तो लोग भी आपको differently देखने लगते हैं. आप busy हो जाते हैं, so आपके दोस्त भी कहते हैं कि यार अब तो time नहीं है, अब तो ये नहीं है. Actually it's just the nature of this work. मुझे personally कैसे affect करता है? I've become a lesser carefree person. I mean पहले मुझे ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट नहीं करती थी, अब छोटी सी बात भी अफेक्ट करती है. आई थिंक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी चीज़ है जहाँ हर सेकंड एक टक 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 यू लुकिंग गुड, यू आर नॉट लुकिंग गुड, आप ये हैं तो आप वो हैं, आप बहुत अच्छी हैं तो आप लोग ये भी कहते हैं कि आप बुरी हैं. So yeah, it does affect you. It affects your entire life. The thing is कि important ये है कि आपको अपने आप को surround करना चाहिए उन लोगों से जो आपको ज़मीन पे रखें, जो कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Okay, next question. Aisha Rahman from Facebook. What's your favorite food? Aisha Rahman from Facebook. My favorite food is anda paratha. I think I've come to the conclusion. Or dal chawal, or biryani. Or Roma Rauf is asked, what does the future hold for MK? क्या नाम है? Roma Rauf. Roma Rauf. Future hold for MK. I hope really good things, inshallah. I'm hoping to do very good work, but I'm also hoping to direct someday, make something of my own. So yeah, I'd love to do that, but for now I'd like to continue acting. Okay, so Omnist Afridi on Facebook has said people here want to see you again in Pakistani dramas rather than Pakistani and Indian movies. What's your comment on it? Okay, what's his name? Omnist Afridi. Omnist Afridi. Acha, Omnist Afridi. Yeah, I would love to do some good Pakistani dramas. Problem ये है कि जैसे आप लोगों को पता है, I can't constantly be working. I have Azlan and I have, you know, there are certain priorities that I have that I can't switch around. So उसमें ये होता है कि मैं एक project कर सकती हूँ, एक project को time दे सकती हूँ और fully करना चाहती हूँ, उसमें
completely involve होना चाहती हूँ. या तो मैं ड्रामा करूँ या फिर फिल्म करूँ. सो जब क्योंकि अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, आई हैव पिक्ड फिल्म्स. लेकिन आई थिंक मोहमना जो है मुझे बहुत जल्दी एक ड्रामा ज़रूर करवा देंगी, मे बी नेक्स्ट ईयर, बट आई विल इंशाल्लाह आई विल डू अ ड्रामा. Okay, so Aisha Aman on Facebook has said, Hey, we love your role in the movie Home and Jahan. Could you please say your favorite line from this movie? Okay, what's her name? Aisha Aman. Aisha Aman. From Home and Jahan, my favorite line. What was my favorite line? You're the ED on it. Why don't I remember any lines? I liked a few lines. I think. The car Wait. scene with the three of you in the start. Police. Yeah. हाँ, when Sherry says कि क्या कहता है वो? पुलिस पकड़ लेगी. ज़्यादा रोमांस. रोमांस ना करना वरना पुलिस पकड़ लेगी. ये तो मैं बोलती हूँ वरना पुलिस पकड़ लेगी. But I also like this dialogue जो मैं बहुत उससे कहती थी जब वो, and it's a very small dialogue, लेकिन वो मुझे जब वो कहता था कि मेरी feelings ये वो, तो मैं कहती थी मैं बटन नहीं, क्या मैं कंप्यूटर नहीं हूँ. What was that line? कि बटन दबाऊं और बंद हो जाऊं, something like that. I don't remember. Homaja, the lines I've forgotten actually. Yeah. But yes, it was a cool character to play. I was one of the boys, and that was fun. Okay, Zara Maham from Facebook wants to know what was the first thing you did when you woke up this morning? Today, Yes. okay, I woke up and I was like, oh my god, and my mother was screaming and shouting today because she was like, "Atho!" We had a really late night. Azlan का schedule बिल्कुल off है क्योंकि holidays खत्म हुई हैं, and we both didn't wake up for school. So it's really bad. I'm very embarrassed that happened. I woke up at about 7:55 and realized I missed school. So yeah, and Azlan was jumping on my back today. Okay, so Muaz Kashif ne pucha hai, has your acting career affected your personal life? What advice do you have for aspiring artists? Muaz Kashif, hi. Acting has obviously affected my personal life. What was that? Drilling? Oh yeah, actually. It has affected my personal life. It obviously the kind of job this is, it's a taxing job. It demands बहुत सारे घंटे आपको देने पड़ते हैं. एक कैरेक्टर में घुस जाना होता है. आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाते हैं इस काम में. तो ऑब्वियसली वो आपको पर्सनली अफेक्ट करता है. बहुत दफ़ा मुझे अपने आप को शेक करना पड़ता है, कट ऑफ करना पड़ता है फ्रॉम अ सर्टेन कैरेक्टर टू गो बैक टू वर्क. या फिर अगर मैं 18-20 घंटे की कभी कभी शिफ्ट कर रही होती हूँ, 18 घंटे की, लाइक बिन रोय पे बहुत दफ़ा की है. सो वी वुड, व्हाट आर यू गाइस टॉकिंग? We're selecting questions. Oh, okay. So the 18 hours I would सुबह you go drop Azlan, then I come back, फिर आप काम करें, फिर आप वापस आएं lunch के time पे. It's just madness. So yes, it affects your personal life, and I think that's why I don't do too much work, because it affects everything. Okay. Faisal Batul wants you to tell us something about Azlan. What should I tell about Azlan? He wants to be an actor. So sad. It's yeah, and everyone's gonna blame me for it. But he's a natural. He also actually wants to be a director, by the way. और वो अपनी स्क्रिप्टें लिखते हैं खुद, and movies direct करते हैं with my phone. हर दिन जब मैं चेक करती हूँ, I'm like, ये किसने लिए हैं इतनी सारी? वो Azlan होते हैं. So that's Azlan. Yeah. And he has the wisest things to say, by the way. अगर मैं कभी जो मैं लिखती हूँ, हमेशा जब वो कुछ बहुत इंटेलिजेंट सी चीज़ बोलता है तो मैं जल्दी से लिख लेती हूँ. He's a wise child, mashallah. Okay, Fatma Khan has asked, when can we see you with Hamza? Oh God, this is such a everyone keeps asking me that. I think मैंने और हमजा ने ये बात की है कि अभी जब हमें अवार्ड एक साथ मिला तो उसने एक्चुअली मुझे तस्वीर भेजी और कहा
this is the only time we will be in the same frame together. And then which I think यही होगा. He's very busy with Maula Jat. हम दोनों को कुछ चीज़ें ऑफर हुई हैं एक साथ. So let's see कि क्या होता है. But हमजा का अपना माइंड है भाई. क्या हमें नहीं पता कि क्या वो कब क्या डिसाइड कर ले, तो हमें नहीं पता. But नहीं, I shouldn't be doing this. I can't do what I do. Babar, Okay, sorry. don't do that. My fault. Okay. They're making me do things I should be doing on live, Facebook, whatever. Yeah, but no. So hopefully, we both have definitely decided or said to each other that yes, we will do something before he quits acting. Okay. So Abdullah Ahmed has asked, which 3 actors do you want to work with? Abdullah. Yeah. Okay. Assalamu alaikum, Abdullah. 3 actors from where? Here. Anywhere. Anywhere? Okay. I'd like to work with Ryan Gosling. Not because of what you guys are thinking. I think he's a good actor. And he's also nice looking. But he's a good actor, Ryan Gosling. And I have worked with Shah Rukh. I'd like to work with Noman Ijaz. And I'd like to work with who? Oh, my manager's saying Varun. She loves Varun. No, but if I had to pick, of course, one of these boys would be amazing, Ranveer. But God, I'd love to share a screen space with Mr. Bachchan. Amitabh Bachchan. Fasiha Salim on Facebook has just asked, do you like Zayn Malik? Fasiha. Yeah. Zayn. I think Zayn is. Assalamualaikum everyone. Walaikum assalam. How are you, Myra? Good. How are you? I'm good. Thank you. How are you, Shahrazad? I'm good. Good to see you. Thank you, same here. And you? We're live on Facebook. Yes, I can see that. Hi. Sorry, I'm just coming out. We're just coming out. I do like Zayn Malik. Of course, I like Zayn Malik. Represent Pakistan, man. Of course. I think there was also another very similar question which said, are you like team One Direction or team Justin Bieber? Is this your own question? No, Sahel? I swear it's right here. Alia Farouk. Alia Farouk says what? Are you? Justin Bieber or One Direction? Bieber. I'm a believer. Okay. So should we take them around? Huh? But I think we should take them around. Should we take them around? Yeah. Can we do that? Yeah, sure. Just one question. Last Okay. Momin Ali Munshi is saying that you're looking super cute right now, 1. And 2, one Pakistani film that released in recent times you wish you were a part of or feel like you could have done a better job at. I don't think I could have done a better job in any of the films that were released. Honestly, I say this with complete honesty. In fact, I also believe that the films or the dramas that I have ever been approached for and other actresses end up doing, they were meant for that. So I don't have this thing that, oh, if I had done this, I would have done a better job. The films that I enjoyed, of course, Jawani Phir Nahi Aani, and I watched Moore. I loved it. I liked what else did I watch? I liked Shah, Manto. I loved, and I loved Sabha Kamal in Manto. That's who's. I was like, wow, she's brilliant. Yeah. Okay, so Amna Abdul Malik has requested you to please sing something. No. No, you have to. No, I can't sing. You join me, I'll sing. Come on, Babar, go. Kya? Come on. Kya gaun? Which I song can't right sing. now? What do I sing? I don't know. Whatever you usually sing, like what will you sing? Okay. That No, one. Gurudat, जाने को कैसे लोग किसे? Oh. Oh, You love Gurudat. Yeah, I love Gurudat, but Okay, quickly, Shania has Come on. asked, lassi or chai? chai. Oh. Chai. Finaya's asked lassi or chai. ये कोई पूछने वाली बात है यार. अच्छा, anyway, even though lassi, अच्छा नहीं.
Meethi lassi, I don't mind. Okay, should we go? Should Yeah, we let's move go. around? Okay, cool. Okay, come. I shall show you. Can I leave my bag and everything here? Yeah. Okay. Huh? Where do you want to go first? I want them to see. Assalamualaikum. Javed wants to go? Let's go. So guys, This is where no work is done. No, I'm joking. All the work is done. Assalamualaikum. बिल्कुल ठीक. लाइव है फेसबुक. वाह क्या? बताएं इनको कि आप कितना हार्ड काम करते हैं. क्या करते हैं आप बताएं. मेरे साथ तो किया है लेकिन फिर भी पूछ के. ठीक. अस्सलामुअलैकुम. गन का फ्रेम. कुदरत सर. Okay, let's go. Let's go. Mahira Kudrath sir. He's sleeping, I think. You want to go to movies? Myra, what's your favorite city in Pakistan? I write after. What's your favorite city in Pakistan? Favorite city? Karachi. Haseeb. Hello. जितना मैं रोई हूँ बिन रॉय में, behind the scenes उतना ये रोए. और He एक is a- चीज है वो है अल्लाह भला करे. Oh. So let me tell you a story, everybody. So Haseeb was the AD on Bin Roy. अब ये मुझे क्योंकि मैं हर सीन में थी और अगर जिन सीन में थी भी नहीं, मॉरल सपोर्ट के लिए बुलाया जाता था या फिर कोई पीछे प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्शन का काम हो तो माहिरा कर लेंगी ना, है ना. हाँ, तो फिर मुझे कॉल आती थी और वो ये हसीब कहते थे कि हाँ जी माहिरा आप आ जाएं. मैंने कहा और हुमायूं? वो कहते थे अल्लाह भला करे वो भी आए. अच्छा, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 2 years हसीब मुझे बोलते थे माहिरा और हुमायूं के नाम के आगे कहते थे अल्लाह भला करे. इज दिस ट्रू और नॉट? तो एक दफा इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कभी हमारा भी अल्लाह भला करेगा या नहीं? सिर्फ हुमायूं का यूं करेगा. मैंने कहा मेरे नाम के आगे भी डालो अल्लाह भला करे. उस दिन मैंने कॉल करता था अल्लाह भला करे आप कब तक आ रहे हैं? ये थैंक यू और बहुत अच्छा काम किया है. बहुत मजा आया इनके साथ. हाँ. बाय. कहाँ जाऊँ? Mahesh. महेश. Oh, and Magzi's asked you, do you watch cricket? No, not really. I didn't know. What's your favorite sport? That was another question. I'm not a sporty person, unfortunately. So I don't enjoy it. Yeah. Sorry. Get it. Okay, this is the guy who has a Manoj Kumar all the time. I swear. Just look at him. Was I lying? Yeah. Did I tell you? This is the makeup room. जी अभी बना है बिल्कुल. अभी हाँ अभी बना. वैसे इस पे मेरा कब्जा है आज का. can we still go? Do we still have something? Do we do? You can keep asking questions. We're going to carry. What Mustaf Khalid is asking again, which place is this and your favorite song and movie? Which place is this? Yeah. So this is basically MD Productions. This is the production house that has made all your favorite dramas. You guys must have been watching Udari right now. Diyare Dil, Manmayal, Zindagi Gulzar Hai, Humsafar, Sadke Tumhare, Shahrazad, you name it. Everything is been. I do miss my old office because that was like a home. And now they've shifted here. So, yeah. Any other questions? Hareen's asking where she loves your choker and she wants to know where you got it from. Oh, it's okay.
I think I got it from. God, I don't remember. I think it's maybe H&M type. Like there were 3 together or something like that. You know, one of those. Myra, what's your height and your weight? I don't know my weight. I never check my weight. My height is I'm just above 5'6". Little bit. Where is he? Tanveer kahan hai? Come, I'll take you to the edit. Oh my god, that's Bin Roy. And he hates it when I do this. But I can do this. Oh my god, he's gonna kill me. Mara, don't touch. Okay, I shouldn't touch Yeah, we anything shouldn't in the edit. But look, it's Armina. Humayun bhai. Humayun. So basically, I think Bin Roy का drama edit हो रहा है यहाँ. हम लोग we will find Tanveer. But other He's smoking outside. I think he's outside. एक question था कि when will the drama air? I think they're saying 18th August or 22nd August. I'm not sure really. Bin Roy, you're never sure about, you know. Like I didn't know the date was releasing. I thought it's not going to release. Aare, niche. Okay, come. I want you all to see Karachi. Tanveer bhai is here. Tanveer bhai. This is my city. Lovely breeze as usual. Karachi गर्मियों में बहुत गर्मी होती है यहाँ लेकिन हवा हमेशा चलती है. So it's lovely. Yeah. Any other questions? Yeah, Okay. there's a question where Saad Munir पूछ रहे, do you play Pokemon Go? No. Saad Munir, no. Pokemon, no. Bhanvi Mehta asks, do you ever feel like getting lost in an unknown place? Hi Bhanvi. Yes, all the time. I think हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो I'm lying actually हफ्ते में हर रोज़ रात को I feel I want to run away and get lost somewhere. कहीं बस घूम जाऊँ वापस. Amy Khan पूछ रही हैं, according to you, who is the best, Atif Aslam or Arijit Singh? Atif. Okay. Are you good at drawing? Perry Triss is asking. क्या नाम है? Perry Triss. Beatrice. Yes, actually, I'm not so bad at drawing. Okay, Hamza Mirza wants you to say his name out loud. Hamza Mirza. Hi Hamza Mirza. How you doing? चलिए. Yeah. Umar Nadeem is asking Mahira Khan, would you like to work as a VJ again? No, I don't think I can work as a VJ again. I don't fit that. Maybe age bracket? I don't know. VJs, you know, Swat. I don't know. No, I don't think so. I'd like to just act more. Okay, how do you find yourself as an actress? Myself? Yeah. मैं तो बहुत critical हूँ अपने बारे में, so I don't know. Okay, so is Tanveer back? Yeah, inside. अस्सलाम वालेकुम. आप लाइव हैं फेसबुक पे जी. तो मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये तनवीर साहब हैं. और इन्होंने, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या एडिट किया है. क्या क्या एडिट किया है इन्होंने. अब शुरू करते हैं. हमसफर, शहरेज़ाद, सदके तुम्हारे और बिन रॉय. All my work has been edited by. तो इनको सारी मेरी खामियां पता हैं, सारी फ्लॉज पता हैं और शायद थोड़ी सी अच्छाइयाँ. तो and he has the best outtakes and bloopers of mine. अभी आप क्या एडिट कर रहे हैं? कब ऑन एयर होगा? ये है सितंबर.
लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो उन्होंने कहा था बस ये अगस्त में आएगा, अब ये सितंबर में आएगा। आप लोग मेरी बात मानिए, ये अगले साल ईद पे आएगा। देखें कब आता है। हाँ देखें कब आता है। अच्छा तनवीर से कुछ सवाल हो जाए? नहीं 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 कोई सवाल नहीं। अच्छा मैं आपको तंग करती हूँ तनवीर? हाँ ठीक है। तनवीर मुझे क्या मेरा नाम क्या आप लिखते हैं जब आप मुझे मैसेज करते हैं? गंगू। Everybody calls me Gangu. नहीं तनवीर and Sarma then बाबर साहब। हाँ बाबर साहब। अच्छा anyway, so we are gonna now go back down. Are we done with the session or are we still going on? We're still going on. Okay fine. मैं आती हूँ आपके पास वापस। ये अमेरिका वाला सीन है ना? हाँ ये मेरे को मैं आ रही हूँ। आ जाओ। Okay, let's go back down. And I think you want to come in front? No, I think. Oh, we're back. Yeah. So we'll. Are we done with this? Myra, We keep going. मेहताब अंसारी पूछ रही हैं आपकी अगली पाकिस्तानी फिल्म क्या है? Mehtab, I have signed a film, लेकिन इस वक्त उसके बारे में बात नहीं कर सकती. But बहुत interesting है. कौन? शहजाद तैयार. सामने बिल्कुल चले गए। पकड़ ले। ये शहजाद कश्मीर में इन्होंने he is one of the finest DOPs that we have in this country. From Zindagi Gulzar Hai to Humsafar to so many others, he has made them look beautiful, and he is now or has been a director, mashallah से. He has done some amazing work. And बिन रोए की जैसे मैंने पहले शुरू में जब मैं थैंक यू सबको कह रही थी, मैंने शहजाद का नाम लिया था और कहा था कि एक डूबती भी नहीं अब बच जाए किसी को, वो ये थे. Literally overnight इनको कॉल आई कि आप आ जाए अमेरिका, and he had no idea. और वहाँ इन्होंने हम सबको हैंडल किया. शहजाद अब आप कुछ बोलना पड़ेगा. क्या? कुछ भी बोलना. आवाज कैसे जा रही है माइक का? ये अब ये ड्रामा नहीं है, माइक नहीं लगे हुए. अच्छा, आवाज जा रही है, फोन से जा रही है. कुछ तक है नहीं. Blank. Totally blank. He's also a very spiritual man. मैं स्टोरी सुना लूँ वो वाली. कौन सी? वो वाली. तो हम लोग सैन फ्रांसिस्को में थे और एक शॉट ले रहे थे. Go on? Okay. So we were in San Francisco. नहीं Santa Barbara. हम लोग बिनरोई का आखिरी लास्ट स्पेल था, आखिरी सीन शूट कर रहे थे. तो बहुत इमोशनल है. ठीक है, इतने इमोशनल हैं कि और अच्छा पूरा क्रू इमोशनल. मैं इमोशनल, हसीब इमोशनल, शहजाद इमोशनल, मुमना इमोशनल. इट वाज अ बंच ऑफ इमोशनल पीपल मेकिंग अ फिल्म, बट ये सबसे ज़्यादा. तो खैर एक दिन जो है वो कौन सा होता है वो टाइम? सनलाइट, मैजिक आवर. वो कौन सा टाइम होता है? 5 बजे के करीब मैजिक आवर होता है. सनसेट टाइम होता है. बट इट्स दैट टाइम वेयर यू नो दैट द स्काई लुक्स ऑरेंज एंड येलो. इट्स ब्यूटीफुल. तो इन्होंने इनको दिख गया सांता बारबरा, वहाँ सारे जो पहाड़ थे, और इन्होंने मुझे कहा मायरा को बुलाएं जल्दी जल्दी जल्दी. मैं भागती हुई बाहर गई और उन्होंने कहा बस खड़ी हो जाए, वहीं खड़ी हो जाए. ओके. वहाँ मैं खड़ी हो गई और इन्होंने कहा कुछ नहीं करें, बस वहाँ खड़े रहें. इन्होंने अपना शॉट लिया और शॉट लेके इन्होंने कुछ नहीं कहा, ये भी नहीं कहा काट, कुछ नहीं. भागते हुए गए, अपने हाथ ऊपर किए आसमान की तरफ, और इन्होंने ये ऐसे करके झप्पी डाली. किसको डाली? अल्लाह को. और he blew so many kisses to the sky and he was like, oh this that. तो ये इतने लास्ट सीन हम कर रहे थे, तो 1 टेक सीन हमने किया. जिन लोगों के साथ होंगे तो डेफिनेटली
ये तो सीरियसली मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात कर रहे हैं, थैंक यू। नहीं हाँ, हम सब में एक वो है ना, मगर आप तो कुछ और। एक दफ़ा, अच्छा अभी लास्ट सीन हम कर लें। बिन रॉय का लास्ट सीन हो रहा है, मैंने अपना पूरा बहुत बड़ा मोनोलॉग था एंड आई गिव अ 1 टेक 1 शॉट। जब ख़त्म हुआ तो शहजाद ने कहा पैकअप करें। हुमायूं का क्लोज, इज लाइक मैं नहीं लूँगा, मुझे लेना ही नहीं है हुमायूं का क्लोज, मैं लगाऊंगा ही नहीं हुमायूं। भूमना ने कहा देखो अभी इमोशनल हो रही हूँ सब, लेकिन क्लोज तो लेना नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा मैं नहीं लगाऊंगा। और ये ऐसे नहीं बात करते, मैं नहीं, हो गया जी, हो गया। I was like, क्या हो रहा है? जब हम सब घबराए में, और हुमायूं एक्स्ट्रा इमोशनल, सही कह, एक्चुअली उनको काम नहीं करना था, उनको अपने डायलॉग्स नहीं बोलने देना है, छोड़ो। वो 1 टेक ही लगेगा। और लगा वो 1 टेक है, इवन दो वी डिड टेक हुमायूंस, हमने लिया था लेकिन वो लगा कभी वो तो सीन आफ्टर या वो वाला रियली सेकंड लास्ट रियली। बट ओके, सो डू वी हैव, थैंक यू शिव, मुझे पता है आपको ये बहुत अजीब लगता है, थैंक यू। और क्वेश्चंस हैं, should we wrap it up? No, there are more. Okay. Khuda Hafiz. Huh? Okay. तो बस कल से अटेंडेंस Okay. Bali, this is for you. Okay, hi Baleed. I got all your messages last night and on Twitter, thank you. Myra Sulaiman Khan is asking what makes you different from other actresses. Okay, should we go back in? Yeah, let's do that. Yeah. सबकी चाय ठंडी हो गई है बाय द वे। अच्छा, ओके, चलिए। What sets you apart from other actresses? Who's asking? What sets me apart from other actresses? I think everyone is different, and I think that's why everyone is who they are. I truly believe that everybody is just unique. मैं अलग हूँ आपसे, आप अलग हैं किसी और से, और as actors क्योंकि हमारे experiences फ़र्क हैं, हमारी दुनियाएं फ़र्क हैं, हमारे childhoods फ़र्क हैं, personal lives फ़र्क हैं, तो we will always do something different with any character we give. So yeah, I don't think anything sets me apart. I think we all work very hard. अच्छा, मायरा हसनैन अशफाक पूछ रहे हैं आपके फेवरेट एक्टर्स इन बॉलीवुड, टॉप 3 मूवीज भी। एक फेवरेट एक्टर आपका बॉलीवुड में कौन है और उनकी टॉप 3 मूवीज? अच्छा, एक फेवरेट एक्टर बॉलीवुड में शाहरुख खान, एंड शाहरुख खान's top 3 films is going to be hard. दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे / कुछ कुछ होता है एक उसमें, चक दे, एंड आई लव्ड हिम इन दिल से। ओके, सो अदनान नवान पूछ रहे हैं आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन। सबसे बड़ा डिसीजन, आई डोंट नो, सबसे बड़ा डिसीजन मुझे नहीं पता। बहुत सारे बड़े डिसीजंस हुए हैं, और बहुत जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि उस वक्त लग रहा होता है बहुत बड़े डिसीजंस हैं, बट देन एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट डिसीजंस दैट यू हैव टू टेक। आल्सो आई एम वेरी इंडिसाइसिव, वेरी। ओके मायरा, ये बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, एक नहीं मगर बहुत से लोग, वो ये है कि वो पूछ रहे हैं कि आप क्या डाइट करती हैं और आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? You guys are lying. Do you like practice yoga? That's also something that came in. That's not fair. This is Seher, my manager, is putting in these questions. I have a feeling. No, she isn't. Okay, because
because she's tried many times to drag me to the gym or drag me for a class, and I just have not been able to go, which is not a good thing. I want to. I just am lazy. I'm so lazy. I know it's not a good enough. तो आपकी स्पेशल डाइट क्या है जो आपको इतना स्मार्ट रखती है? हैं? क्या? बाबर कह रहा है खाना. हाँ, मैं बिल्कुल ठीक खाना खाती हूँ और I don't know. मैं घर का खाना खाती हूँ. मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खा. अल्लाह, मैं जंक फूड कब खाती हूँ? नहीं. अच्छा, मैं जंक फूड कभी कभी खाती हूँ. कभी कभी. See, I'm saying everything and they're all denying all of the things that I'm saying. Yes. Okay, The point is that I eat good. I think I'm blessed with maybe good genes, but I need to start working out for sure. Okay, Veronica Paul is asking on Facebook, what is your biggest fear? Veronica Paul, my biggest fear is obviously to lose someone very close to me. It's a huge fear, and I think another big fear is to fail. I don't want to fail. Okay, so Ahad Murtaza Facebook पे पूछ रहे हैं आपकी खूबियाँ और आपकी खामियाँ क्या हैं आपके? क्या नाम? आहद मुर्तज़ा. आहद मुर्तज़ा. अस्सलाम वालेकुम. खूबियाँ मैं अपने मुंह से अपनी खूबियाँ बताऊँ? नहीं. खामियाँ ये हैं कि मैं इंडिसाइसिव हूँ. मैं कभी कभी हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. पर आई थिंक सबसे बड़ी खामी यही है कि मैं बहुत इंडिसाइसिव हूँ. मेरा दिमाग एक जगह पे जब ठहर जाए तो ठहर जाए, लेकिन इट टेक्स मी अ वाइल टू मेक अप माई माइंड, विच इज़ अ बिग प्रॉब्लम. और कोई खामी है बाबर? शायद क्या खामी? लोगों पे ट्रस्ट जल्दी करते हैं. बाबर कह रहे हैं लोगों पे ट्रस्ट जल्दी करते हैं. आई डोंट. या क्या? माहिरा, ये एक और सवाल है जो बहुत हर जगह से लोग ये पूछ रहे हैं, एंड दैट इज दिस इज स्पेसिफिकली फ्रॉम विश्वजीत खत्री. वो ये पूछ रहे हैं, हाउ डू यू डील विद द एक्साइटमेंट एंड इम्पेशंस सराउंडिंग रईस? हेलो विश्वजीत. I don't. How does one deal with it? You know, I wish कि कोई एक डिवाइस होती जो कि शायद आ जाएगी. अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है दैट आई थिंक कि एक ऐसी डिवाइस भी आ जाएगी जो आप लगाएंगे और आप कहेंगे डील विथ माई एंजाइटी, डील विथ माई एंगर, डील विथ माई इशूज. अनफॉर्चुनेटली आई जस्ट हैव टू डील विथ इट. सो आई डोंट नो, इट कीप्स मी अप समटाइम्स. मैं सोचती हूँ उफ क्या होगा, कब होगा, ये वो. बट मुझे ऐसा लगता है रईस के केस में कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए. And we all have worked really hard. Every single person on that project has worked really, really hard. So मेरा जो एक पर्सनल मानना भी है और एक एक्सपीरियंस भी है कि जब एक प्रोजेक्ट में लोग प्यार से और बहुत मेहनत से काम करते हैं ना, that sails through. So I'm hoping that happens with Raiz, inshallah. So शाहिद अली ने भी जो सवाल ये पूछा है कि what are your expectations from Raiz? शाहिद जी. Hi Shahid. Assalamu alaikum. My expectations, I don't know. I don't have any expectations. I didn't have any expectations from Bin Roy or even Humsafar or Sadke Tumhare or Homan Jahan. Yes, I hope. मुझे एक बस एक उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी. मुझे ये उम्मीद है कि I want that मेरा काम अच्छा हो. Can you talk about your role in Raiz or not yet? No, I don't think I'd like to talk about my role in Raiz. If it was just around the corner, maybe, but not right now, right? Okay, ji. Sara Sohail Durrani is asking, what would you be if you wouldn't have been an actress? I would have been a bathroom actress. I would have done all scenes, all my thing in my bathroom. That's what I would have been. I don't think I could have been anything else. Sari Sahab asks, do you ride a bike? Do you know how to ride a bike? Bicycle या bike? मैंने Bicycle bike चलानी रखा है. आती लेकिन motor bike नहीं आती चलानी. No, I'm not one of those motor bike CBU पे, you know. नहीं.
I wish. मजा आता है helmet पहन के. I'll ask Adil. You know, Adil knows how. Adil rides a bike, and I think I'm gonna ask him to teach me how to ride a bike. मुस्तफ़ा फुरकान पूछ रहे हैं कोई इंटरेस्टिंग वाकया बताइए with SRK. बहुत सारे इंटरेस्टिंग वाक़े हैं SRK के साथ, लेकिन आई थिंक अभी बताना कोई let the promotion time come, फिर बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन रमीन फातिमा पूछ रही हैं do you have any phobias? Do I have any phobias? No, not really. No, मुझे अब नहीं. कभी कभी प्लेन में जब बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होती है तो मैं ऐसी दुआएं पढ़ती हूँ कि आप सोच नहीं सकते कि मैं. Okay, my cousin is asking, can you act like Kharak? My cousin, she just messaged me. Kharak? Yeah, of course. Can you do it right now? Kharak is me. Kharak maybe like she's my can alter you, ego. can you do something for us? Like, Yeah. Which one should I do? Up to you. Mummy, One of your favorite dialogues. yeah, please. Oh, I always do that same dialogue. No, I'll do Sadke Tumhare. Okay. हम ना हो तो फिटे मुंह मोहब्बत का. Done? Okay. Are we good? Okay, ji, Faisal Siddiqui is very impatiently asking you, will you marry me? Will give you whatever you want. If someone asks so, what would you like to have? अब ये मत सोचना हंसी तो फंसी. फैसल. हाँ, अच्छा. So Faisal Siddiqui is asking to marry me. अच्छा, no, And he will give you whatever He will you give me want. whatever- And what is it that you would like? he will give me whatever I want. And he's asking me what I want. Okay, so Faisal, I am so sorry. I don't think I can accept your proposal. It's really nice of you to offer me everything. But yeah, no. It's what do I say? Because if should I keep going? Should I just, what do I say to Faisal? But thank you for the proposal. It's really sweet. It's also really sweet that you've asked me what I want. I don't know if boys ask that anymore. Okay, Dheeraj Pujari. Myra, one Bollywood song you'd like to dance, perform on, or wish it was picturized on you? Dheeraj, what? Dheeraj Pujari has Dheeraj. asked one Bollywood song that you wish was picturized on you, Hello, Dheeraj. or What? you would like to perform on. Oh my god, I don't think I could do justice to the songs that I've loved in Bollywood. Lekin I would love to do Thare Rahiyo in Pakiza. I would love to do Wahida Rahman in Jaane Kya Tumne Kahi. I'd love to do Madhuri in Palki Mein Ho. I mean, there are too many. But you know what I'm loving these days? I mean, it is my official jam. By the way, I want to thank बार बार देखो's team, because हालांकि मुझे परफॉर्मेंस अपने गानों पे करनी थी, लेकिन बैक स्टेज मेरे कमरे में काला चश्मा चल रहा था, so that मेरी एंजाइटी लेवल कम हो, and we were all dancing to काला चश्मा in my room. It's true. What a song, man. What a song. We're gonna play it right after this. We're gonna play it. Gary Sidhu पूछ रहे हैं, what if you were offered a role like Black of Rani Mukherjee? Oof, I'd love to do it. I'd love to do it. It would be a role and a half. I'd love to do it. You want to उमेर नईम पूछ रहे हैं, शाहरुख खान से आपने क्या सीखा है? हेलो उमेर. शाहरुख खान से मैंने सीखा है कि आप दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो सकते हैं, जो कि वो हैं, और जब आप सेट पे आते हैं तो आप एक एक्टर हैं जो मेहनत करते हैं, जो उसी तरह मेहनत करते हैं जिस तरह बाकी सब कर रहे होते हैं. So yeah, I've learned from him that again, you can be the biggest star in the world, but your job is your job and your craft is your craft, and I'll never forget that, and I'll always keep that with me. What is your favorite book
And favorite sort of music? I like old Hindi music. And I like. Oh my god! Oh my god! Stop taking my. Just fell down. That's crazy. Should we end the chat session though? I think we also have to. What's the time? It's 5 to 5. Oh my god, we have done this for an hour? Okay, any last questions? Should we roll it? Should I take a... Let me... Can I... Okay, now it's just me. What we're gonna do is I'm gonna read these out. Thoughts on Hamza Ali Abbasi. He's a friend and he's someone I have great conversations with. Okay, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. कैसे मिल सकती हूँ? Please tell me here in Karachi. अगर आप यहाँ आ जाती तो आप मुझसे मिल सकती थी. I'm going to... My manager who was taking this video has fallen down, so I'm going to do this myself. What else? Let's see. Can I just get a hi from you? Oh, by the way, Ripan, hi. Fiha just joined, so... Never put the phone on charge during the session. Oh, really? Why? What else? Your favorite Pakistani drama? Daam. I used to love Daam. I think it's one of the best Pakistani dramas ever made. And I also, from the old dramas, I used to have a DVD, college mein, of Angan Tera. And I love it. Angan Tera is one of my favorite Pakistani dramas. अगर आप लोगों को मिल सके तो ज़रूर देखिएगा. Congratulations on your award. Thank you so much. Hamza Ahmed, उनकी दोस्त की बर्थडे है अरीबा और हैप्पी बर्थडे अरीबा. Sorry, I'm so bad with all of these things, but I think I'm gonna go now since we are nearly done with this. Should we wrap up? Can we wrap up? Okay. Guys, this was amazing. Thank you so much for this. Okay, where? Okay. This was amazing. I am gonna do this often, not so often. I'm sorry कि मैं अपने social media platforms में बहुत बेकार सी साबित होती हूँ. Lekin I love all of you. I read your messages. I did this so that I could thank all of you. आप सबके सवाल. I hope कि मैंने सारे जवाब answer किए हैं. And I'm really... sorry, hold on. Okay. God, there are too many people here. Anyway. So thank you to everybody. I am sorry to those that I have not thanked. But really, all of you guys are in my heart, and I love all of you. जिंदगी में एक बार आपको देखना चाहता हूँ. साउथ इंडिया से हूँ. प्रमोशंस पे मिलेंगे. अच्छा जी. Okay, so I'm gonna go, and I will hopefully. देखा? काला चश्मा. काला चश्मा is taking over the world. Okay, I need to go and join all of these guys for Kala Chashma, which we're going to be dancing on. Take care. I love all of you. We will do this very soon again. I've had a lot of fun. Salma Javed, I'm mentioning your name. Hiba Gul, I'm mentioning your name. And a shout out to my team Mahira Khan on Twitter, and another fan page which is, I think, mahirakhan.net.
Also, some very special Twitter fans that I have, fans, whatever you want to call it. From Sana to Millie to Deep to Simi to Mehtab. There are so many of you guys. I love you guys. Mwah. And now you want to see them dance? Go on, go on, go on. Go on. Oh my God. Okay, bye guys. Mwah. Khuda Hafiz. How do I end this? कैसे end करूं? देखना. अच्छा, how do I end it?